विनय महलकार जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं प्रबोधनी से, उनसे आग्रह है कि वो पीयूष जी का स्वागत करें। जैसा कि आप सभी को पता है, माननीय मंत्री जी लंबे अरसे से लगभग 3 दशकों से राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। मूलतः रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं। काफ़ी सारे मंत्रालयों का अनुभव है। एक लंबे अनुभव के साथ आज हमारे साथ मूलतः महाराष्ट्र से हैं। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में रहना होता है और हम सभी के साथ आज जुड़े हैं। माननीय मंत्री जी का स्वागत है। सुशासन महोत्सव कल से हमारी शुरुआत हुई है। सुशासन महोत्सव ये एक ऐसी कल्पना है जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले संस्थाएं हमारे साथ आकर के एक साथ एक मंच पे अपने गुड गवर्नेंस को प्रदर्शित कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। मैं पीयूष जी से आग्रह करूंगा कि वो सेशन को आगे लेकर जाए। Sir, first of all, welcome to the Sushasan Mahotsav organized by Rambhav Malgi Prabodhini and sponsored by Poonawalla FinCorp, co-sponsored by Govardhan Eco Village. So far, on both the days, we have had so many chief ministers and union ministers joining us. And so far, this is the concluding interview that we are having with you. So many chief ministers. Sir, for youngsters like me, I see you as the perfect example of how a 21st century leader should be. You know, with modern policy-making style, a huge mass base, pro-development thoughts, a 360-degree leader, I must say. So, on the pretext of this, what is your idea of Sushasan or good governance? Is my first question. Thank you, Piyush, for having me, and it's always a pleasure to be at an event like this, especially because it's connected with the thought and the idea of a progressive India. And a progressive India is defined by not only her economic prowess at an event like this, but her adhyatmik shakti and her sanskritik shakti. It's always an honor to be part of this Prabodhini Karikram. I'd like to thank Vinay ji as well for his relentless, quote-unquote, pursuit towards the rise of the other two Indias that I've talked about. Good governance and Sushasan, त्याचं महत्व काय? Good governance, and we go back to ancient India, where today you have given me, and I must thank you for this beautifully carved Bhagwan Ram's Janam Bhumi Ayodhya Dham Mandir. If you go back 1,000 years, concept of Sushasan is not a new concept for India. Concept of good governance is not a new concept for India. But it is only this Prime Minister in the form of Narendra Modi ji that have brought back timeless and age-old concepts that were part of our DNA. But over centuries have been literally put underground as part of our DNA, and it is that re-emergence of the concept of a progressive Vasudeva Kutumbakam form of India. The world is one family. It is not a new notion for India. And therefore, good governance to me means सुशासन जिसके आधार पर देश का हर एक व्यक्ति, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो, चाहे भरूच से अरुणाचल प्रदेश की आखिरी गांव तक हो,
जो हर एक व्यक्ति को के जीवन को प्रभावित करता है, जहां एक सरकार स्थापित हो, जो सरकार जनता के सेवक के रूप में काम करे। We in government, as legislators, as ministers, have a fiduciary responsibility that the people of our area have given us. Whether you're a member of parliament, 16 से 20 लाख लोग, तुम्ही आमदार आहेत, if you're an MLA, 3.5 to 4 lakh people, to conduct yourself in the service of each and every one of your constituents. And what does that mean? That means that literally, and I'm not exaggerating, एक मतदाता, मतदाता का शब्द क्या है? मत देने वाला दाता, दाता मतलब आपका भगवान, उसे आपको, उस भगवान की पूजन आपको करनी होगी, उस भगवान की सेवा आपको करनी होगी। ये केवल एक राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है, ये एक धार्मिक जिम्मेदारी है, ये एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। And that to me, if you are able to touch and make lives better for the people that you represent, that to me is Sushasana. So whether you are a Khasdar or an Amdar, an MP or an MLA, Jila Panchayat Adhyaksh, Janpad Adhyaksh, a minister, you are not sitting there as a regulator. You are not sitting there as a gatekeeper. You are sitting there as a problem solver. You are sitting there, आपको एक खोज पे होना होगा। साधारण तौर पर क्या होता है? नेता इंतजार करता है, जनता मेरे पास परेशानी लेके आए, और अगर विनय जी आ गए तो मैं विनय जी को कहूंगा, विनय जी जरा डेलीगेशन लेके आइए, डेलीगेशन के साथ 200 और लोगों को लेके आइए, ताकि आभास हो कि ये मांग हो चुकी है, उसके बाद मैं पूरा करूंगा। सुशासन में आपकी जो आपने मांगा उसे पूरा करना मेरा धर्म है, और जो आपने नहीं मांगा उसे भी पूरा करना मेरा धर्म है। And therefore our job is not to sit as a regulator or a gatekeeper. Our job is to sit there as a facilitator, problem solver. And वो रुख, वो भावना, वो चेतना, वो एक अंतरात्मा की आवाज पहली बार देश में, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा वो ज्वालामुखी एक एक जनसेवक के दिल में बसाई गई है। आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उस जिम्मेदारी का निर्वाह आपको कैसे करनी चाहिए, वो एक नई भारत की कल्पना के आधार पर उस पथ पर आज भारत चल चुका है, जिस भारत का अमृत काल से शताब्दी काल तक उस लक्ष्य की पूर्ति हमें करनी है। Absolutely a brilliant and a very insightful answer, sir. You talked about politicians or public leaders being solution seekers and not problem seekers also. Problem makers. Problem. Sir, as we all know that you talked about Prime Minister Modi's constructive approach towards basically everything related to governance. He has been rooting all the government for maximum governance than bureaucracy and Minimum government and maximum government governance, as you rightly mentioned. So the era of Modi ji's leadership has been always about constructive initiatives, path-breaking reforms in every sector basically. You have been given the responsibility of civil aviation sector. So sir, what is that one game-changing decision that you have made? What is that scheme or what is that particular reform that you would like to share with us today that has transformed the
post 2014 civil aviation scenario? So I think there are many, but I think what is important, Piyush, is not only the outcome, but it is also what is important is the process. And तेच में आमाजी विचारधारा होती कि there's a paradigm shift with Prime Minister Narendra Modi ji in the way in which even government functions. You asked me for one or two paradigm changes, and I think in the civil aviation sector, let me give you an example. We have an industry that was, if I may use the word, is pretty much a bloodbath, and it was slaughtered for almost over a year and a half during COVID, when all planes were on the ground and you still had to pay lease costs, and it's a miracle that actually airlines survived. But there was a V-shaped recovery. Now, one of the biggest structural issues within civil aviation is that you have a raw material in the form of air turbine fuel, which constitutes close to 40% of your operational cost. In a sector which was not making money, 40% of operational costs means 40% of your revenue structure also. Second, that air turbine fuel, pricing of that commodity is dollar-based. Your revenue is rupee-based. Third, when I took over, out of the 36 states and union territories in India, we had 12 states and union territories that charged value-added tax on air turbine fuel, ranging between 1 to 4 to 5%. But we had 24 states and union territories that charged value-added tax on air turbine fuel, ranging between 20 to 30%. Now imagine, raw material, 40% of your operational costs. Dollar-denominated raw material, rupee-denominated revenue. On that 40% of your operational cost, you have to pay 30% of value-added tax. And in an environment where air turbine fuel cost went from 53,000 rupees a kiloliter to 1,45,000 rupees a kiloliter, which means almost 3x. So 40% of your cost went up by 3 times. On that, you're paying VAT of 30%. How will you survive? So the first thing I did was approach every state government and every lieutenant governor of every union territory. And I explained to them the economies of scale, the advantages that accrue to states by greater connectivity. If you lower tax, your VAT on ATF, more airlines will come in, you'll have more flights. If you have more flights, you'll have more economic activity, more industry will come in. तो पुराने ज़माने में ये सोच थी कि पहले जहाँ आर्थिक प्रगति होती है वहीं एयरपोर्ट लगेगा. आज वो पूरी विचारधारा बदल गई है. जहाँ एयरपोर्ट बनता है वहीं आर्थिक प्रगति होती है. पहला प्रश्न जो आपका उद्योगपति पूछता है आपको कि आपके गांव, आपके शहर में एयर कनेक्टिविटी क्या है जब आपको उद्योग लगाना है. एयर कनेक्टिविटी नहीं है, अरे प्रॉब्लम है. So there are huge economic multipliers. Secondly, I also explained that if you lower tax rates, more refueling will happen in your state. More refueling will happen rather than looking at a larger piece of a smaller pie, look at a smaller piece of a larger pie. So if you're earning 100 crores revenue from VAT, but your refueling is only 10 planes, if you lower VAT, 100 planes will refuel and you'll earn more, not 100 rupees, but you'll earn 105 rupees. The Laffer curve example, lower tax rate, increase revenues.
And I'm glad to report to you today that out of 24 states and union territories, we were able to persuade chief ministers and lieutenant governors of 19 states and union territories. And we lowered VAT on ATF from 20 to 30% down to 1 to 4%. And I must, through you, Piyush, thank all those chief ministers and LGs who took that leap of faith with me. And today we have, from a situation of 12 versus 24, 12, 1 to 4, 5%, and 24, 20 to 30%, we have a position of 31 between 1 to 5%, and only 5 left that are in 20 to 30%. And that has provided a huge fillip to the airline industry. Greater connectivity has resulted in greater economic growth. Greater economic growth has led to more flights landing there. And example I'll give you of Srinagar. Their earnings from VAT by lowering tax rate has gone up almost by 25 to 30% because there are more flights landing in Srinagar now. So that was a huge change, because I think all of you will understand the complexity of dealing with state governments, getting a cabinet note passed, getting a gazette notification done, and changing law in multiple states. But I must thank, through you, all our chief ministers and LGs that came on board. So that's the one big change. But I wanted to talk to you about process. That's outcome. Two things I've tried to change, and I've tried to do that over the multiple responsibilities I've had in the past as a minister as well. Generally, what happens is that we end up working in silos between ministries, between state government and central government, and even within a ministry. So if he is JS of a department within this ministry and I'm the JS of another department, if there's something that's taking power away from me, I will oppose him, even though it may be in the interest of civil aviation. So the concept of what Prime Minister has said, always the whole of government approach. And therefore, this is something that I brought about when I first became telecom and post and IT minister many years ago, that I brought about a dashboard system of government, where we prioritize the top 50 to 70 items that we as a ministry need to tackle, the real muscle and bones, what the problems are, and find the solutions. And every Monday we have a dashboard meeting with the whole ministry sitting with me. Two important things. Minister generally sits at the head of the table. I always sit in the center of the table. It's an intangible signal, but it's a very powerful signal. When the minister sits in the middle of the table and not at the head of the table, the signal that you're sending is that, if anything, I am only in as much as an equal stakeholder as all of you. And if we all work together, then we'll be able to solve the problems. Point one. Point two, we go with great granularity on every line item. But let's assume that I'm the joint secretary or the director or the additional secretary. Piyush is the minister. My points with him are over. Generally what happens, sir, can I leave? Because my points are over. Can I go? No. You have to sit through the whole dashboard meeting. Why? Because you must know what Piyush is doing, what Vinayji is doing, what X, Y, and Z is doing. You must understand what the whole ministry is doing, even though it may not be your direct responsibility. Because then you understand the system of working. You understand that you're here to resolve problems. I've said I've sent it. He says he has not received it. Why? Because we are still in our minds working on that box. In and out. Simple thing. If I've sent the file, pick up the file, send him an SMS. Boss, file is on its way. Please clear it. I believe in the principle that a file must not sit on your desk for more than 3 hours.
there is no excuse for a file sitting on your desk for more than 3 hours. I will not go to sleep at night until my desk is clean. Doesn't matter if it is 2 in the morning or 3 in the morning. I must start the morning with a clean slate. And that's the kind of work culture we are trying to inculcate. The third practice that I brought in is I've put together about 7 advisory groups in civil aviation, where government and the private sector are members of an advisory group. So I have an advisory group for airlines, I have an advisory group for airports, I have an advisory group for flying training organizations, for MROs, for aerospace manufacturing, and multiple others, for small regional airlines. Each one of these advisory groups, we sit together, what is the problem? Identify the problem, identify the solution. And in the next meeting of the advisory group, even though it may be the private sector, I as minister have to present an action taken report to the group. These were the issues that we identified. Piyush has to do that. I have to do this. What is the status of this when we meet again? So there is a concept of responsibility, collective responsibility and collective accountability. So these are the 3 or 4 things that so therefore outcome is important, but that outcome only comes if your process is outcome based and positive based. That's a great, I mean, a lot of, I mean, we must put our hands together for this answer. So I must say, it's a 360-degree answer, I would say. I saw also the glimpse of the investment banker that you carry inside you when you were describing the V shape as well as the revenue structure. And I also saw the stakeholder inside you when you were mentioning that I used to sit at the middle of the table so that I become the part of the team and the team functions like a team. Always remember, you are only as strong in whatever line you pursue in life, whether you're a business person, you're a social worker, you're a philanthropist, you're whatever line, you're a politician, whatever line you pursue, always remember that, or you're a sportsman, most important, or a sportswoman, you're only as strong as the weakest link in your team. So your job as a leader is to improve the strength of your full team. When your full team strength grows, your strength grows. Absolutely, sir. When it comes to teamwork, you are a part of team whose captain is Prime Minister Narendra Modi ji. And Prime Minister Narendra Modi ji is known for his unique style of interaction with his colleagues, his anyone that comes across Prime Minister, sir. What are your experiences? Can you tell us one story that you would like to share with us, where he probably surprised you in a good way, or you got to learn something from Prime Minister from that particular interaction? So the one thing that I have to tell you, and I think that's something I need to work on, because as important as it is to identify your strengths, it's even more important to identify your weaknesses in life and try and work at your weaknesses. One of the most important facets and traits and qualities of a great leader is his or her ability to listen. Leaders love talking. Very few leaders listen. My first meeting with Prime Minister Modi ji, when he gave me this responsibility of civil aviation, and I took time to present my
dashboard. So I went to meet him after 2-3 weeks of taking over, after I've understood, grasped, put together my thoughts. Because there's no point taking time and wasting time if you've not done your homework and not gone with your ideas. Again, going back to my investment banking experience. So I had some ideas, I took my dashboard and I took time. The Prime Minister of India, the weight of the country and the weight of the world is on him, because we don't have a personality who's only the Prime Minister of India. We are blessed today because we have a personality leading our country who's a world leader today. So I went in thinking that, I'll have 10 minutes, maximum 15 minutes. एंड मेरी ये आदत है कि मैं स्वतः संकोच करता हूँ कि आपकी इतनी जब व्यस्तता हो तो आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता मैं. And I went in to meet him. Uninterrupted. He spent 1 hour with me. Uninterrupted. हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, विनय जी बैठे हैं, मैं उनसे मिलने गया हूँ, पीयूष जी जाते हैं, 10-12 व्यक्ति पीयूष जैसे व्यक्ति अंदर आते हैं, पर्ची देते हैं विनय जी को, अब ये आ गए हैं, अब वो आ गए हैं, अब विनय जी कुर्सी पे बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, फोन रिंग कर रहा है, विनय जी कह रहे हैं 1 मिनट में जरा, हाँ ठीक है, हाँ आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे सिंधिया जी? नॉट वन फोन कॉल, नॉट वन पर्ची. And apart from, we discussed my ideas at a later point. He talked to me about my experience, my childhood, my education, what my ideas were. And I just walked out of that meeting stupefied. I was in shock. And that is something it's something, Piyush, I can't describe to you. It's not something tangible. It's something intangible. It just goes here. कि इतने महान व्यक्तित्व ने आपको अपने अमूल्य समय से निकालकर आपको जो समय दिया, वो उनका समय आपके साथ था, किसी और के साथ नहीं. और आपको कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि आप उनके ऊपर बोझ हो या इतनी चीजें हैं जो देखना है. हाँ बताइए, और इस पे बताइए. एंड दैट्स एन अमेजिंग कैपेबिलिटी. It has to be something that is part of your DNA. It's not something that can be acquired. And I walked out of the meeting saying that this is one quality I have to learn. Unfortunately, I don't think we as human beings can learn it, but I'm trying to learn. It's not just you, sir, it's many, and it also includes me also, to learn that particular thing. Other problem in our life is this. मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि अब मैं केवल नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं हम सब इंसानों की बात कर रहा हूं. ये आया था हमारा गुलाम बनने के लिए, हम इसका गुलाम बन गए. उठाओ तो प्रॉब्लम, ना उठाओ तो प्रॉब्लम. परिवार में भी बैठे हो शाम को तो परिवारजन भी सब के सब खट 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 यही चल रहा है. एक चीज मैं आपको कहूं पीयूष, मैं जवान तो इतना नहीं हूं, पर जो भी है, पर मेरी आत्मा बहुत बूढ़ी है. जो पुरानी तौर तरीके होते थे, जो रिश्ते बनते थे, वो आज आपको दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है. Absolutely, sir, absolutely. Speaking of the past, the glorious past that India has had,
आने वाले 12 फरवरी को माँ भारती के महान सपूत द ग्रेट ग्रैंड मराठा महादजी सिंधिया की पुण्यतिथि है। एक वीर सेनानी के साथ साथ वो एक कुशल प्रशासक भी रहे। महादजी सिंधिया जी के एक वंशज के नाते, इस भारत के नागरिक के नाते, ऐसे कौन से पाठ आप महादजी सिंधिया के जीवन चरित्र के हमारे साथ साझा करना चाहेंगे जो आज भी उतने ही रेलेवेंट है और आप भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका उपयोग करते हैं? ये मेरे पूर्वजों ने, और केवल महादजी महाराज ने नहीं, दत्ताजी महाराज ने बुरारी घाट में रोहिला जो चीफ थे नजीबुद्दौला, उनको गोली से मारी और वो जब अपने घोड़े से गिरे तो ये पानीपत की लड़ाई के पहले, तो उन्होंने उनके छाती पर अपना पांव डाला और बोला कि दत्ता जी और लड़ोगे? तो अपने मरते हुए सांस से दत्ता जी महाराज ने कहा कि नजीब, जिएंगे तो लड़ेंगे। और आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मेरे परिवार के 16 वंशजों के, 15 वंशजों के सिर काटे गए अहमद शाह अब्दाली की सेना के द्वारा। और बरछे पे उनके सिर को डाल के मराठा कैंप के सामने घुमाए गए। 14 साल के जंकोजी महाराज को अहमद शाह अब्दाली कैदी लेकर अपने कैंप में ले गए और उनसे पूछा कि आप मेरी सेना में ज्वाइन करोगे? क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे भारत में भी जो ज्वाइन कर रहे थे। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा पर ज्वाइन नहीं करूंगा। आग के ऊपर लोहे के सूले को तपाकर उनके आंखों में डाले गए, उनके शरीर के 20 टुकड़े किए गए और नदी में फेंके गए। एक ही इस परिवार का वंशज बचा उस पानीपत के तीसरी लड़ाई में, वो थे महादजी महाराज। और वो भी एक पीस में नहीं, उस लड़ाई में उनका पैर काटा गया था। रणभूमि में घायल थे, एक पैर के बिना, मतलब अपाहिज। 14 जनवरी 1761 उस आदमी जिसका पूरा परिवार मिट गया, पूरी मराठा 1.5 लाख की सेना मिट गई, विश्वासराव मिट गए, सदाशिव भाव मिट गए, वो आदमी अकेला एक पांव के साथ दोबारा खड़ा होकर अपनी पत्नी, अपनी मां के जेवर को बेच के दोबारा मराठा सेना को खड़ा करके 10 साल के अंदर 10 फरवरी 1771 लाल किले पर नाग निशानी भगवा ध्वज गाड़ के रख दिया। अटक से लेकर कटक उड़ीसा तक, गुजरात के भारूच से लेकर प्रयागराज इलाहाबाद तक मराठा साम्राज्य को स्थापित किया। और शिवाजी महाराज का जो सपना था हिंदवी स्वराज का स्थापित करने के लिए, महादजी महाराज ने उस सपने को अपना संकल्प बनाकर सिद्धि के रूप में परिवर्तित करके दिखा दिया। और 1771 से 1803 तक 32 साल पहला हिंदू शासक जिसने लाल किले से, दिल्ली से पूरे देश में राज किया। और उनकी सोच और विचारधारा ये नहीं कि मैं अपना साम्राज्य बना रहा हूं, देश में एक सबसे बड़े
जनसेवक और शासक के रूप में स्थापित थे। पर जब लोग जाके कहते थे महाजी महाराज, नहीं, मैं महाजी महाराज नहीं हूं, मैं पाटिल बुआ हूं। और मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्योंकि थोड़ा महाराष्ट्र की कहानी है। सिंधिया परिवार की शुरुआत गांव से हुई थी। हम लोग, एक छोटा सा गांव है सातारा जिले में, उस गांव का नाम है कनेरखेड़। उस गांव के मेरे पूर्वज राणोजी राव शिंदे, जो बाजीराव पेशवा की सेना में थे, और रावेर खेड़ी में जो बाजीराव पेशवा की समाधि बनी है, जहां बाजीराव पेशवा का देहांत हुआ था, वो समाधि राणोजी महाराज ने बनाई। आज जिस महाकाल के मंदिर में आप और हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो कहानी भगवान राम की मंदिर की है, वही कहानी महाकाल की थी। इल्तुतमिश ने 1125 में महाकाल के मंदिर को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था और शिवलिंग को वैसे ही कुएं में फेंक दिया था, जैसे ज्ञानव्यापी के कुएं में काशी में। और राणोजी महाराज ने उस लिंग को पाकर दोबारा जिस महाकाल मंदिर में आप और हम आज दर्शन करने जाते हैं, वो राणोजी महाराज के द्वारा बनाया गया महाकाल का मंदिर। तो महाजी सिंधिया की जो सोच थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी विचारधारा के साथ, क्योंकि वे देख पा रहे थे कि विदेशी ताकत आ रही है। और जो लॉर्ड वेल्सली है, जो बाद में जाके नेपोलियन के साथ लड़ा था, उसने अपने रिकॉर्ड में भी लिखा है और अंग्रेजी में लिखा है, द बिगेस्ट थॉर्न इन द साइड ऑफ द ब्रिटिश is the Scindia. Remove him and your path to the Hind will be clear. महाजी महाराज अगर जीवित होते तो अंग्रेज इस देश में कभी अपना पैर नहीं जमा पाता। और उन्होंने एक जनसेवा का राज्य स्थापित किया दिल्ली में। और आपको आश्चर्य होगा पीयूष, आज हम लोग सब यमुना से पानी पीते हैं। यमुना का पानी दिल्ली में लाने का काम महाजी सिंधिया ने किया था। दिल्ली के लाइन के, वो पुरानी दिल्ली की बात कर रहा हूं, नई दिल्ली नहीं जहां हम बैठे हैं, सारे सुएज लाइंस महाजी सिंधिया ने बनाए थे। बाड़ा हिंदूराव अस्पताल महाजी सिंधिया ने बनाए थे। और तो और क्या, मोहम्मद गजनी ने जब सोमनाथ के मंदिर के द्वार लाहौर ले गए थे, जब अटक तक झंडा फहराया था, लाहौर जाके सोमनाथ मंदिर के द्वार वापस लाकर महाजी शिंदे ने भारत वापस वो द्वार सोमनाथ मंदिर के लेके आए थे। जनसेवा, विकास, सुशासन, आध्यात्मिक शक्ति भारत का दोबारा स्थापित करना। उस जमाने में महाराष्ट्र से, दूसरे दक्षिण राज्य से बहुत सारे श्रद्धालु आते थे उत्तर भारत में दर्शन करने के लिए और मां गंगा में स्नान करने के लिए। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा, उस जमाने में महाजी शिंदे के द्वारा, जो आज आप और हम, हमारे पास पासपोर्ट है ना, जब हम विदेश जाते हैं वीजा स्टैम्प करके विदेश जाना, उस जमाने में श्रद्धालु का पासपोर्ट तय किया था कि अगर ज्योतिरादित्य जा रहे हैं या पीयूष जा रहे हैं तो उस पर स्टैंप लगता था कि पीयूष और ज्योतिरादित्य मराठा साम्राज्य और महाजी शिंदे के प्रोटेक्शन के अंतर्गत है, कोई इनका बाल भी बाका ना करे। तो उनकी सोच, विचारधारा और एक ही माले में सबको पिरोकर जो फौज उन्होंने खड़ी की, उसका नाम उन्होंने दिया था फौज ए हिंद। सिंधिया आर्मी नहीं, मराठा आर्मी नहीं। और उस फौज ए हिंद में मराठा, महार समाज,
राजपूत समाज, जाट समाज, आदिवासी समाज सभी समाहित थे, क्योंकि उनको मालूम था कि एक मोती के माले में पिरोकर ही उस शत्रु का सामना हम लोग कर सकते हैं। तो ह्यूमिलिटी, विकास की विचारधारा, यूनिटी, एकता, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज हम लोग आईटी और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। वो देख पा रहे थे कि जो शत्रु आ रहा है वो तलवार और ढाल से नहीं लड़ता, वो कैनन और राइफल और मस्केट के साथ लड़ता है। तो भारत की सेना का आधुनिकीकरण, और उस जमाने में चाणक्य नीति, दुश्मन का दुश्मन, 4 फ्रेंच जनरल्स को लेके आए थे और पूरा मॉडर्नाइजेशन फौज हिंद का, कैनन, मस्केट, कैवलरी, आर्टिलरी। और उस जमाने के बाद जो आज भी व्याख्यात हैं, मराठा लांसर्स, जो अब राष्ट्रपति भवन के प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के भाग हैं, उसमें वो सम्मिलित किए गए थे 1947 के बाद, और पूरे देश में व्याख्यात थे। तो पूरा मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, और मैं बात कर रहा हूं 300 साल, 350 साल पहले की, तो उनका इतना दूर दृष्टिकोण था। एंड ये हमारा सौभाग्य है कि आज 10 फरवरी, जिस दिन दिल्ली के लाल किले पर मराठा सरदारों ने महादजी सिंधिया महाराज के नेतृत्व में भगवा लहराया था, उसी दिन सुशासन महोत्सव का समापन होने जा रहा है, वो भी सम्माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सानिध्य में। इस ऊर्जावान और बहुत ही अभ्यासपूर्ण साक्षात्कार के हेतु मैं आपके बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं माननीय मंत्री जी। इसके बाद मैं अनुरोध करता हूं कि कमलाकांत पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, ये कार्यक्रम सुशासन महोत्सव की कल्पना पिछले 3 महीनों से चल रही थी।